Good morning. We are reading the chapter solution. Okay. Today we will discuss about the solubility. Solubility क्या होता है? ऐसे इसे हिंदी में घुलनशीलता कहा जाता है. You feel different substance have different amount of solubility. अलग अलग substance का अलग अलग solubility होता है. You feel some substance or you see some substances are more soluble in water, some substances are less soluble in water, and some substances are soluble in water and some substances are insoluble in water. For example, sodium chloride and sugar dissolve readily in water, but we see in case of naphthalene and anthracene do not dissolve, but it will dissolve in benzene. Okay, that means like dissolve like, मतलब एक तरह के गुण वाले एक तरह में डिजॉल्व कर पाए. और वी नो वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके, तो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फर्स्ट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसपे सॉलिड का सॉल्विटी लिक्विड में उस पर डिपेंड करता है. पहला आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सेकंड आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट बोथ आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ऑल सब्सटेंसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ओके, in case of temperature we see if you increase the temperature then solubility will increase, but you remember if the dissolution process is endothermic the solubility should increase with rise in temperature, and if it is exothermic the solubility should decrease, because you know in case of endothermic heat is absorbed, that means temperature will increase and the solubility will increase. But in case of exothermic reaction heat is evolved or heat is released, so the dissolution process or solubility will decrease. Okay, and last the effect of pressure. प्रेशर का क्या रोल है सॉल्विटी में? तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्विटी ऑफ सॉलिड्स बिकॉज you know solid and liquid are highly incompressible material, so it will remain unaffected by changes in pressure. If you change the pressure then there will be no effect on the solubility of solid and liquid. Okay, these are the three factors which affect the solubility of solid in liquid. Okay, thank you. Next day we will discuss about the solubility of a gas in the liquid. Okay, thank you.